Officer, Department of Statistics and Operation Research Shell, Aligarh Muslim University. First of all, I want to introduce our resource person. After that, we will start the sessions. Dear participants, we are honored to welcome Dr. Mohammad Azam Khan, an esteemed academician and researcher. Dr. Khan currently serving as an assistant professor in Department of Statistics and Operations Research at Aligarh Muslim University, Aligarh, has carved an exploratory academic journey. Dr. Azam embarked on his academic pursuit by the completing his MSc in 2011 from the Aligarh Muslim University, where his dedications and excellence were duly recognized with the Merit Scholarship. His passions for the statistical research led him to the pursue a PhD, which he successfully completed in 2016. Following the completion of his doctorate, Dr. Azam Khan assumed the role of a research officer at the Jaipuria Institute of Management, Lucknow from June 2017 to July 2018. With the robust foundations in research and academia, Dr. Khan has emerged as a profiled scholar in the field of statistics and operations research. His primary area of expertise including order statistics, records, and generalized order statistics. Driven by the commitment of the advancing knowledge, he has contributed significantly to the academic landscape, boasting an impressive portfolio of 25 research papers published in international reputed journals. In addition to his scholarly achievements, Dr. Khan is an active participant in the academic community, having presentations his research findings at numerous international and national conferences across India. His engagement in these of the conference not only the showcase his dedications to staying at the forefront of his field, but also highlight his commitment to the knowledge disseminations and collaborations. As we eagerly anticipate the insight and expertise the Dr. Mohammad Azam Khan will bring to our workshop on extend our gratitude for his invaluable contributions to the realm of the static and operations research. Join us in welcoming Dr. Khan's visionaries academic research as we embark on the journey of the learning and explorations in this workshop. I requested Dr. Azam sir kindly start and enlighten us with your valuable knowledge. Thank you, sir. Thank you. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you. Thank you, everyone. And very good evening to all. Let us start with the Good evening, sir. good evening. Let us start with the very important part of any type of statistical analysis. And it is not a is part of statistical analysis, but when you start survey or any study or any research, the first and important thing is that sample size determination. So how to calculate the sample from the population, which type of how many samples required for particular study, such type of issues are created at the time of research. So we start from the sample size determination. So when you have a sample size which is based on cross sectional studies, sample size calculation for cross sectional studies or survey means which is based on completely based on population. Then if your population is if your variable is qualitative,
means if there are two types of variables are there, qualitative and quantitative. So if your variable is qualitative, then to calculate the how to calculate the sample size, that is the formula. Sample size is equal to z square alpha by 2 small p into 1 minus p upon d square. So what is small p? Let's take the example. Suppose an epidemiologist want to know the proportion of children who are hypertensive in a population. Means you want to know the proportion of a children who have a high blood pressure, hypertension in a population. Want to know the proportion in a population. अगर आपको पता करना है proportion in the population, because it is a qualitative variable, then we use this formula z square alpha by 2 p into 1 minus p upon d square. Z square alpha by 2, alpha is the level of significance which you already fixed from the initial stage of a question, and it is given from the standard normal table. P is the proportion of that particular study, which this value is the this value will be taken from the previous study. Means अगर आप previous में इस तरह की studies अगर हो रखी हैं या previous में अगर study नहीं हुई है तो क्या करेंगे हम? Then we take the pilot survey, then we consider the pilot survey and generate information from those pilot survey. Then it will gives you the value of p. And what is d? D is the margin of error. D is the margin of error, maybe 5%, 2%, 10%, which you are trying to fix. Margin of x error आप fix कर लेते हैं. Then we use this uh, formula to calculate the sample size. Z square alpha by 2 p into 1 minus p upon d square. This is the notations. Z is alpha by 2 is it is coming from standard normal table, already generated table. Level of significance is 5%, then Z alpha by 2 value is 1.96. If you consider alpha is 1%, then it will be your 2.58. P, what is small p? Expected proportion in a population based on previous studies. यानी previous studies में इस तरह की अगर कोई study हो रखी है तो उनकी उसमें क्या आया है, proportion क्या था. अगर आपके पास studies हैं, then you consider that value as a p. If you don't have any value, then conduct pilot studies. Means you conduct the survey on a small part of the population. Then after that you can consider that value as a small p. And d is the margin of error which you already considered, that you can tolerate. The margin of error means difference between sample and population. Means sample and population, यानी population जो कह रहा हो, sample जो कह रहा, जो आप ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 5%, 10%, जो भी आप फिक्स करें प्रायर में कि हम इतना कंसीडर करेंगे, 5% और 10%, दैट विल बी योर मार्जिन ऑफ एरर. Now consider an example. Suppose that a researcher want to estimate proportion of patients having hypertension in a pediatric age group in a city. According to previously published studies, actual number of hypertensive may not be more than 15%. The researcher want to calculate this sample size with the precision of 5% at type 1 error of 5%. So if we use the above formula, means हमें क्या पता करना है? Suppose the researcher want to estimate the proportion of patients having hypertension in a pediatric age group. यानी children का जो pediatric age group में उनका proportion क्या है पेशेंट्स का, जिनको बच्चों को हाई बीपी का इश्यूज हैं पार्टिकुलर सिटी में, हमें पता करना है. तो हमें क्या प्रोपोर्शन, हम कितना लें जिससे कि हमें पता चले कि जो हम स्टडी प्रॉपर स्टडी उसकी कर पाए. तो हमने देखा कि प्रीवियस स्टडीज में हमने देखा, प्रीवियस पब्लिश्ड आर्टिकल्स में वी हैव सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रीवियस पब्लिश्ड स्टडीज दैट हाइपरटेंशन मे नॉट बी मोर देन 15%. हाइपरटेंशन में नॉट बी मोर देन 15%, यानी 15% से ज्यादा हाइपरटेंशन पीडियाट्रिक एज ग्रुप में नहीं था. तो प्रीवियस स्टडीज से हमें ये पता चला. तो P इज इक्वल टू 15%, दैट मीन्स 0.15. ये हम प्रीवियस स्टडी से कंसीडर कर लेंगे. एंड इट कंसीडर हेयर
error alpha is 5%, which is already given. 5% means z alpha by 2, 5% level of significance, that will be 1.96. That will be square. Here square is missing because formula, once you see the formula, z square alpha by 2 p into 1 minus p, z alpha by 2 5%, 1.96. And next one is z alpha by 2, it should be square, z square 1.96 square into zero point 0.5, p is 0.5, which is given here. 0.5 previous, it is coming from previous study, previous published articles से आप कंसीडर कर सकते हैं. अगर नहीं है तो पायलट सर्वे हमें करना पड़ेगा. 1 माइनस पी अपॉन डी स्क्वायर, डी इज गिवन हेयर. प्रिसीजन और एब्सोल्यूट एरर ऑफ 5%, यानी आपने कहा कि जो मार्जिन ऑफ एरर है वो हमने 5% कंसीडर किया है, तो 5% का हो गया 0.05 डी स्क्वायर. नाउ 196 proportions, 196 samples are required to estimate the proportion of patients having hypertension in a pediatric age group in a city. यानी आपको 196 पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट है, जरूरत होगी सैंपल्स की, जब आपको इस तरह की कोई स्टडी करनी होगी. क्योंकि आपने प्रीवियस पब्लिश्ड आर्टिकल्स में देखा कि 15% था, तो 15% के बेसिस पर और मार्जिन ऑफ एरर के बेसिस पर आपने सैंपल साइज कैलकुलेट किया, एंड यू get 196 samples are required to estimate the proportion of patients having hypertension in a pediatric age group in a city. So 196 samples are required when your data is qualitative. This formula is for qualitative data. Now consider the quantitative variable. अगर आपको quantitative variable आपके पास है, कोई स्टडी में आपको पता करना है, सपोज a same research is interested in knowing the average systolic blood pressure of a children of a same city. यानी आपको अब ब्लड प्रेशर पता करना है कि knowing the average blood pressure of a children of a same city. Suppose in a particular city, what is the average blood pressure of a children? Suppose your study of such type, then your data is quantitative variable, so you can use this formula: sample size is equal to z square alpha by 2 sd square, standard deviation square, upon d square. Now in this case your variable is quantitative because you have to obtain the average systolic blood pressure. Blood pressure is in the form of quantitative data, so that's why we consider quantitative variable. Now your formula will be changed. Now it becomes sd square, standard deviation square, upon d square, z square alpha by 2 sd square upon d square. Now this sd square, you are there is you are thinking that you don't have any idea about the population, so in this case also you, this value has been taken from the previous studies. इस तरह की कोई अगर स्टडी हो रखी है पहले से, तो then you consider the standard deviation value from that previous study and calculate the sample size. So z alpha by 2, that is coming from standard normal table. What is the sd value? Standard deviation value taking from the previous study or pilot study, and d is nothing but margin of error. Now consider the formula. Now consider the example. If the researcher is interested in knowing the average systolic blood pressure in a pediatric age group of that city at 5% type 1 error and precision of 5 mmHg of either side more or less than mean systolic blood pressure, and standard deviation based on previous studies is 25. यानी प्रीवियस स्टडीज में स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ब्लड प्रेशर का, प्रीवियस स्टडीज में हमने देखा 25 था, और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपने पहले से फिक्स कर रखा है, और प्रिसीजन मार्जिन ऑफ एरर 5 आपने ले रखा है. देन वी यूज दिस फॉर्मूला बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन एवरेज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन पीडियाट्रिक एज ग्रुप, यानी बच्चों का जो एवरेज ब्लड प्रेशर क्या है ऑन एन एवरेज पॉपुलेशन में, जो बच्चे रह रहे हैं किसी पर्टिकुलर सिटी में, उनकी पॉपुलेशन में बच्चों का एवरेज ब्लड प्रेशर क्या है, तो आपको पता करना है. देन वी यूज दिस फॉर्मूला z स्क्वायर अल्फा बाय 2 sd स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर. Z alpha 5% given, that will be 1.96 value, that is fixed, square of this value. SD square, that is 25 square because 25 from the previous study, and 5 square because
precision 5 it is given, margin of error 5 is already given in your question or already fixed that you consider 5%. So 5 is given, 5 square 1.96 square to SD square upon D square. Then you get 96 samples are required for this type of study. यानी आपको टोटल 96 सैंपल्स रिक्वायर्ड होंगे इस सैंपल की स्टडी करने के लिए. सो दिस टाइप ऑफ इश्यूज व्हेन यू फेस, देन try to understand which type of variable you have. If you have a quantitative variable, then you consider z square alpha by 2 sd square upon d square. If you want to know the proportion of any study, then use the z square alpha by 2 pq p into 1 minus p upon d square. As per the need of your research, you can use such formula. Now, the second one is sample size calculation for testing a hypothesis. Means clinical trials or clinical interventions. Means if you want to compare two groups. यानी अगर आपके पास कुछ इस तरह की स्टडी है कि आपको दो किसी चीज का पार्टिकुलर चीज का इफेक्ट चेक करना है और आपके पास दो ग्रुप्स हैं, तब आप हर ग्रुप में कितने सैंपल्स की रिक्वायरमेंट होगी. देन इन दिस केस यू कंसीडर द फॉलोइंग फॉर्मूला. In this kind of research design, researcher want to see the effect of an intervention. Suppose a researcher want to see the effect of anti-hypertensive drugs, so he will select two groups. One group will be given hypertensive drug and another group will be given as placebo. Means suppose any company want to know the effect of anti-hypertensive drug, that is this drug is effective or not. So he considered two groups. One group is given a placebo, means just like a dummy variable, dummy medicine is given to that group, and one group given the anti-hypertensive drug which was invented by any company. So you have two groups. So what is the sample size in these two groups? How can we calculate? So we consider, in that case we consider this formula for sample size calculation for comparison between two groups when data is quantitative. यानी अगर आपका डेटा क्वांटिटेटिव है, when the variable is quantitative like blood pressure, weight, height, all these variables are calculated in the quantitative. Means height 62 162 165 centimeter, weight 62 kg 82 kg, blood pressure 120 90 95. So these are the quantitative data. So in such type of studies, when you have two groups and you want to know the effect of any particular thing, then you consider this formula. Sample size is equal to 2 into sd square z beta plus z alpha by 2 upon d square. So in this case you get z beta plus z alpha by 2. Z beta is the power of test which is already given value in your question. Z alpha by 2, this value is also from the level of significance. D beta is the power. SD, a standard deviation coming from the previous studies which is already happened, or you can consider it, you can collect data from the pilot study, then you can put it in the place of SD. Now use this formula in this case. Now consider any example. See, these are the notations of SD is the standard deviation from the previous studies or pilot study. Z alpha by 2 is that is coming from standard normal table. If your alpha is 5%, that will be 1.96. And if Z beta is also from the Z table, because beta is 80, generally it considered 80%. Beta is 80% generally considered by the researcher, 80% power. So when 80% power, then Z is 0.20. Now what is the value of D? D is the difference between mean values. यानी जो दोनों ग्रुप्स हैं उनकी प्रीवियस में जो डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज क्या होंगी, हमारी दोनों ग्रुप्स का जो डिफरेंस होगा उसको हम कंसीडर करेंगे. और ये दोनों ग्रुप्स की प्रीवियस स्टडीज पर डिपेंड है. यानी जो दोनों ग्रुप्स हैं वो हमारी प्रीवियस स्टडीज में व्हाट आर दी what these values has been taken from the previous studies or pilot studies. Now consider any example. Suppose a researcher want to see the effect of potential hypertensive drug. Means
You want to know the effect of any hypertensive drug. He want to compare the new drug with placebo, means he want to compare the new drug with healthy persons. Researcher think that if new drug reduce the blood pressure by 10, यानी जो न्यू ड्रग आप दे रहे हैं, जो हमने इन्वेंट करी है, वो रिड्यूस कर देता है ब्लड प्रेशर को 10 तक एज कंपेयर टू प्लेसबो, देन इट शुड बी कंसिडर्ड एज clinically significant. Means this type of study, we have two groups. One groups are given as a placebo, means dummy. One groups given the new invented antihypertensive drug, and company claims that this drug reduced the blood pressure by 10 mmHg. Let us assume standard deviation found in the previous study 25 mmHg. Suppose the researcher select level of significance 5% and power of study 80%. Generally, we consider alpha 5% and power of study 80%. Effect size in this condition is 10 mmHg. So effect size D is also given. In this case, what should we do? 2 into SD square Z beta. The value of Z beta is 0.84, which is already given from standard normal table. Z alpha by 2, 1.96 already given. In previous studies or pilot study, you can consider a 225 value. Standard deviation value is 25 square upon D. Effect size D is the margin of error, which is already given in your question. You have considered 10 square, then 98. Total sample size is 98. So in this case, 98 researchers are required per group. So in each case, for this type of study, you have required 98 subjects per group. Means you have 98 samples are required in each group for such type of study. If you want to know the effect of any hypertension, any intervention, effect of anything in a group, then if your data is quantitative, then you consider 2 into SD square Z beta plus Z alpha by 2 square upon D square. So 98 samples are required for each group for such type of study. So when data is quantitative, so in this when data is qualitative, so what will we do when your data is qualitative? In this case, when a point of a clinical intervention study is qualitative, like if you want to know the how many disease or non-disease person, what is the uh, male or female, what alive or dead, such type of data is qualitative data, yes or no, disease or non-disease, male, female. So when you have a qualitative data in your study, then we use this formula 2 into capital P into 1 minus P Z beta plus Z alpha by 2 whole square upon P1 minus P2 whole square. That is P1 minus P2 is also equal to D. This P1 or P2 has been calculated also from the previous study. This P is also, that is the pooled mean of P1 and P2, you can consider from the previous study. Now what is the notations of this? P1 minus P2 is the difference in the proportion of event in two groups. What is capital P? Pooled prevalence. Prevalence in case group P1 plus prevalence in control group P2 divided by 2. P1 plus P2 divided by 2. That is the pooled prevalence. And this has been taken from the previous studies or pilot studies. Z alpha by 2 coming from the standard normal table 1.96. Z beta, it is also coming from at 80%. Power value is 0.84. Now consider the example. In the previous studies said that 20% of the patients of myocardial infarction die within a specified time. The researcher feel that if the drug being tested increasing survival to 30%, then the finding can be considered as a significantly clinically significant. Means previous studies said that 20% of the patients are died due to myocardial infarction, die विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम 20% है आपकी वैल्यू. आपका कह रहा है प्रीवियस स्टडीज में 20%, पी इज 20%, कैपिटल पी इज 20%, जो बता रहा है कि डेथ हो जाती है ड्यू टू पेशेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्केशन विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम. द रिसर्चर फील दैट
the new drug being tested increasing the survival to 30%, और ये increase कर देता है 30% survival को, it is significantly clinically significant or not. So in this case, effect size in your question given zero point 0.2 minus 0.3 means 0.2 previous studies, 0.3 30% increase कर देता है, then it will effect size is minus 0.1. At 5% level of significance and 80% power, size will be pooled variance capital P is zero point 0.2 from the previous study. 30% survival increase is second group. 0.30 divided by 2 is 0.25. So capital P is 0.25. 1 minus P is 1 minus 0.25. 2 is already in your formula. The value of Z beta is 0.84 from standard normal table. 1.96 from Z alpha by 2. And what is the value of P1 minus P2? That is zero point 0.2 minus 0.3, that is minus 0.1. So square of this value and calculate it, we get 294. 294 samples are required in each group for such type of study. So this type of formulas are important to calculate the sample size, because sample size calculation is very important and play a vital role in your research or in your survey. Suppose you can use the, if you have any idea about the exact idea about population, then directly you can use the Slovin's formula. Slovin's formula means capital N upon n upon 1 plus ne square. Capital N, small n is equal to capital N upon 1 plus ne square. Capital N is the population size, 1 plus ne square, n is the capital N is the population size, and into e square is the margin of error. So if your population is 5,000 and you want to know the what will be our sample size, so your formula will be 5,000 divided by 1 plus 5,000 into e square. Suppose your margin of error is 5%, so 0.05 square. Then you can calculate and you get the sample size. You can use the Slovin's formula when you have the exact population size. And there is no thumb rule, but if you have a population, you don't have any idea about the population, just consider 10% of the population from the sample and you get the exact idea, better idea from the population. So this is the part of the sample size determination. Now the next thing is how to calculate the SPSS, student trial version of SPSS. Just click on this site. This is the site of IBM SPSS where you can download the student trial version, because it's the licensed software. So the company gives the gives an student trial version to the students, and you can fill the following entities, and after that you get the confirmation code and click on it. Just consider, are you a student, select yes, and you get the student trial version of SPSS for any type of analysis. Then after that, as per the your software, as per your software properties, if you're 64-bit or 32-bit, as per your need, you can click on that particular area and you get the download the SPSS software. So there is the SPSS student trial version is available for students. So basic idea about SPSS. So as per though his name is statistical package for social science. So as far as name concerned, it is based on social science, but it is widely used in all the area, means medical, art, engineering, science, social science, agricultural. In all the areas, you can easily uh, analyze the data through SPSS software. So SPSS widely used in all the area, and you can analyze the data. Descriptive either data is your, if you want to analyze, you want to get the output in the descriptive means summary of your data set, or any type of chart, or if you want to know any inferential statistics, you can easily use the
statistical software. There are so many softwares are there like SPSS, Minitab, R, Python. You can easily software, but SPSS is user friendly, but it is licensed software, so you can download the student trial version. Now let's start from the very beginning, that how to deal with SPSS. Once you click the SPSS, you get the following. First, you get the window, means let's start from the initial stage, means creation of data files in SPSS. How to input data in SPSS, because it is the most important part in SPSS, because when you enter the data properly, then definitely you get the proper answer. Means अगर आपने प्रॉपर एंटर नहीं किया डेटा, तो आउटपुट भी आपको उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा. तो ये डेटा एंट्री इज द मोस्ट important part of any analysis. So first important part is data creation in SPSS, how to enter data in SPSS. Now come to the main file of SPSS. Just I want to show the SPSS file. Just wait, I want to share the SPSS file. uh, Want to share some new file. See, wait. Now once you click on SPSS, you get this type of window. Now it is शो हो रही है आप लोगों को, एवरीवन? Is showing or not? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now once you click on it, you get the this window. Now in the left hand side, in the bottom of the left hand side, you get data view and variable view. Once you click on data view means you are entering the data in your variable, and the variable view is the important part of data entry, because it contains several sections of the data set. Means variable, in variable view you have entered your variable, so it contains following sections: name, type, width, decimal, label, values, missing, columns, align, and measure. So first we start with name. Name means what is the name of the variable? Name of the variable. In name you consider the short form of your variable, and it does not consider any spacing. ये spacing को consider नहीं करता है. So suppose you any survey start from demographic studies, so you consider like age. So just write age, you consider age. So you just use the short form. Suppose you are in if you have question, so many question, 25 questions are there, just write q1, q2, q3. But remember that it does not consider spacing. Means suppose if you write age of the respondent, age of, means there is a spacing, and click on it, show this one. This error, variable name contains an illegal character, so that means it does not consider spacing. So just write age. Age means, so once you click on the next section, type gives you an idea about the which type of data in age. Means by default it considered numeric. Age is in the form of numeric data. It must be 25, 23, 64, 68. So it is a quantitative data. तो क्वांटिटेटिव डेटा एज होगा, तो बाय डिफॉल्ट ये सॉफ्टवेयर न्यूमरिक लेता है. तो न्यूमरिक इसने कंसीडर कर लिया. तो न्यूमरिक को हमें यहाँ पर और भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं. न्यूमरिक एंड स्ट्रिंग्स आर वाइडली यूज्ड इन दी एनालिसिस, बट बाय डिफॉल्ट इट कंसीडर न्यूमरिक. तो एज हमारा न्यूमरिक होगा, सो वी कैन नॉट चेंज इट हियर. And what is next one is width of the characters which are used in this one. So 8 by default it consider 8.
you can consider, you can increase the width of your characters 9, 10, 11, 12 as per your need. So by default it consider 8 characters are there in your name. So it by default it consider 8. Now decimal means how many decimals are there in your variable. Age, suppose age is given, there is no decimal in the age, all the respondent is there is no months or points are there in your data set. So 64.0038.00, there is no decimal. By default it considered 2, but if you want to consider it, just like 00. Now label is the extended form of your name, so you can use the question, proper question, you can write it here like age of the respondent, you can write it here, age of the respondent, you can write it here. Okay. Now next one is values. The values means it is also an important part, because here you can code the values. Coded values means coded values means suppose in demographic data you can easily ask male or female sections is also there. Suppose you want in your research there is any study based on male and female, so male and female you can code male as a 1 or female as a 2, male as a 1, male as a 0, female as a 2, whatever be your code, you can code it here. So there is no coding in age, so leave it here. Missing, how many data, how many values are missing here, so by default it consider none, so no need to check it here. If any value is missing, just put it. Column, by default it consider 8 characters in the column, so there is no need to change it, there is no nothing to change it. If there you want to increase in the characters in the column, you can use it. Alignment, it is right aligned or left aligned, whatever be your data, it doesn't matter. So चाहे वो लेफ्ट हो, राइट अलाइनमेंट हो या सेंटर में हो, तो एनालिसिस पे इस पे कोई फर्क नहीं आता. बट मेजर there are two types of variables: scale, ordinal and nominal. So what is scale? Scale means if your data is quantitative, then you consider it as a scale. If your data is qualitative, scale means height, weight, temperature, because qualitative variables and quantitative variable, there are two types of variables, and quantitative variables are of two types: ratio and scale, ratio and interval. So ratio and interval both are considered as a scale in SPSS. So height, weight, age, all things are coming in scale category. And if your data is qualitative, like ordinal and qualitative data is of two type of scales: quantitative nominal and ordinal. Nominal means if your data is male, female, then you can consider nominal. Ordinal means if your data is in the form of order. Ordering is important in the ordering, like Likert scale: strongly disagree, agree, then can't say, strongly disagree, and is such type of ranking, like views, reviews आप देते हैं ना फ्लिपकार्ट के कि I am highly satisfied. So such type of data if you have, then you consider ordinal. So here our problem is variable is age, so consider scale. Now come to the next variable. Suppose you are interested in, your next variable is gender. Gender is also your variable in demographic studies, just like gender, by default numeric. Now gender, but you consider in your survey gender is male and female, so numeric is not here. But now you can code it, if you code it here male as a 1 and female as a 2, now it will be your quantitative. तो जेंडर आपका न्यूमरिक बाय डिफॉल्ट कंसीडर कर लिया है, तो यहां पर आप कंप्लीट फॉर्म में लिख सकते हैं. नाउ लेबलिंग, कंसीडर द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ योर क्वेश्चन. तो जेंडर ऑफ द रिस्पोंडेंट, जेंडर ऑफ द रिस्पोंडेंट. Now important part is missing value. So how to code these gender? 1 for female, write value 1,
label female, yani 1 as a coded as female, add it here. See, 2 for male, add. Okay, now 1 is considered as a male and 2 is considered as a female. So there is no decimal point, just consider 0. Now come to the data view. Just see age and gender. You have entered here only two variables and you get two variables, age and gender. So now gender, write 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1. And this is a hypothetical data. And what is the age of your variable is maybe 25 of your age of respondent, 25, 67, 76, 45, 45, 67, whatever be 66. So this is the uh, data in age group, and gender is the 1212 as per your gender of the respondent. Suppose you forget that what is the meaning of one, so no need to worry, just go the top of the SPSS section, click on value labels, click on value labels. Once you click on it, you get the code of the data. Means if you forget that what is the meaning of one, no need to worry, just click on value labels. What is the meaning? One for male and two for female. What is the meaning of two? Click on it, two for male. So this value labels gives you the uh, show the coded form of your data. So this type of entry is required. Suppose if you have so many questions, q1, q2, q3, q4, so write it q1, q1 here, q1, q2. And what is q1? You can write it here. क्वेश्चन वन का एक्सटेंडेड फॉर्म आप यहां लिख दीजिए, Q2 का एक्सटेंडेड फॉर्म आप यहां लिख दीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आप डेटा पुट कर दीजिए. तो अकॉर्डिंग क्वेश्चंस यू कैन पुट इट डेटा हेयर. और ये जब आप प्रॉपर एंट्री करेंगे, वंस यू एंटर्ड द डेटा प्रॉपरली, देन डेफिनेटली यू गेट द बेटर आंसर. क्योंकि अगर आप गलत कोड करते हैं, गलत फीड करते हैं, तो प्रॉब्लम होगी आपको. This is the important part of data creation. Now come to the I want to show the PPT. Come to the PPT slide. I want to share the PPT. See, creation of data files, as I already told you that this gives you the such type of window, data view window and variable window. ये मैंने आपको बता दिया है अभी. So no need to waste time on this. Data view, variable view, it is important. Now it is already discussed, type with decimal label. ये मैंने डायरेक्टली आपको एसपीएसएस पे बता दिया, बिकॉज पीपीटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एसपीएसएस के थ्रू बताना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो नो नीड टू वेस्ट टाइम ऑन दिस. नॉमिनल, ऑर्डिनल, आई ऑलरेडी टोल्ड यू. So next important part is import a data file. Why it is important? Because you have once you collect your data, it is not 20 or 5 or 10, 5 और 10 और 15, 15 अगर आपके पास है, then you can easily enter data on SPSS. So but the problem is, suppose you conduct your survey on online internet, so you can make questionnaire on Google. गूगल मीट, गूगल शीट आपने यूज करी और वहां से एक्सेल फाइल पे आप अपने रिस्पोंडेंट को रिस्पॉन्स को नोट कर लिया आपने. सो एवरीवन मेक्स द क्वेश्चनायर रिस्पॉन्स ऑन एक्सेल शीट. सो कैसे हम उसको कॉल करेंगे, एक्सेल शीट को कैसे कॉल करेंगे एसपीएसएस में, इसको, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो सबसे पहले एक वन थिंग इज मोर इम्पोर्टेंट इन research, that if you want to analyze your data in SPSS, then make your Excel file as per the SPSS. So SPSS में अगर आप करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि SPSS पे आप उस फाइल को SPSS में जिस तरह की जो इंपॉर्टेंट है, जो
वैल्यूज उनको उसी के अकॉर्डिंग आप फीड कीजिए डेटा। सो जैसे नेमिंग में विदाउट स्पेसिंग, name में without spacing, it does not consider any spacing, so you make prepare your excel file. Suppose age there is no spacing is there, so age there, suppose you write marks of student, so click on marks of student without, write the marks of student without spacing. so जैसे मैं अभी आपको शो करूंगा, एक क्वेश्चन आयर है हमारे पास, आई वांट टू शो द क्वेश्चन आयर। To show the questionnaire, actually questionnaire gives you an idea about questionnaire. Where is, just 1 minute, I want to add questionnaire, Google Sheet. Yeah, suppose this one is questionnaire. Suppose sure. Suppose this is a hypothetical question. Data analysis with SPSS to study the health condition of a people in a city. A random sample of 25 users are taken and following informations are recorded. Suppose in a particular city, I want to know the health condition of a people in a particular city, and 25 users are taken as a random sample and following informations are noted. Person, gender, age, monthly income, health score, score and activity score. So what will be our variables? Variables are gender, religion, age, monthly income, health score, personality score and activity score. So what will we do? Coding gender as a male 1, female 2, because हम SPSS में करेंगे। तो हमें जो एक्सेल फाइल जो हमें प्रिपेयर करनी है अपनी, जब ये रिस्पॉन्स आ जाएगा तो ये जो डेटा है हम जब एक्सेल फाइल में अपने प्रिपेयर करेंगे तो जेंडर में कोई स्पेसिंग नहीं है, सो यू कैन राइट इट जेंडर एज ए as this one. Religion, age, no need to change anything. Monthly income, so write mi as a monthly income, or if you want to write monthly income as a whole, so then write it without spacing, monthly income. Health score write without spacing, because आपने देखा कि SPSS में in naming it does not consider any spacing, so write PS, personality score. So because you prepare your Excel file as per your need, as per your SPSS demand, so activity score write AS, because name it does not consider any spacing. And what is the next important part is, जब भी आप एक्सेल में बनाएंगे और एसपीएसएस में आपको एनालिसिस करनी है तो आपका जो डेटा होगा वो ऑलरेडी कोडेड होना चाहिए। यानी एक्सेल फाइल जो आप लिखेंगे उसमें आप जो रिलीजन या मेल फीमेल को कोड कर देंगे, ऑलरेडी मेल और फीमेल को ऑलरेडी कोडेड करना पड़ेगा हमें, 1 और 2 जैसे हमारा आप कोडिंग करना चाहते हैं। सपोज हमारे क्वेश्चन में 1 फॉर मेल 2 फॉर फीमेल है, तो 1 को कोड करेंगे मेल और 2 फॉर फीमेल। ये हम ऑलरेडी कोडेड, कॉल करने से पहले हमें पहले ही कोड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने कोड नहीं किया तो कॉल तो हो जाएगा मेल फीमेल, लेकिन जैसे ही आप उसको न्यूमरिक करेंगे वो डेटा आपका कंप्लीटली वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या होगा फिर? प्रॉब्लम होगी, फिर से आपको उसको फिल करना पड़ेगा, डेटा एंट्री करनी पड़ेगी। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू कोड इट बिफोर यू कॉल द डेटा। सो यहां पर हमने एक छोटा सा डेटा सेट लिया है, इसके बेसिस पर हम एग्जांपल्स सेट करेंगे, एग्जांपल्स बताएंगे आपको। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हाउ टू कॉल डेटा इन SPSS। तो हाउ टू कॉल डेटा इन SPSS,
See, if you have a variable, I want to call the data in SPSS. File, open, go to file, go to open, go to data. Suppose you save your file in Excel sheet, then how to call data in SPSS? Just click on file, go to open, go to data, click on it. Now come to the, suppose my file is saved on desktop, click on it, go to the path. Now change, your file is in Excel form, click on file or types. So go to Excel. Now the file in this was my file. Now click open. This one, open Excel data source. Now continue, and you get this one: person, gender, religion, age, monthly income, health score, personality score, and activity score. So you can easily call the data from the Excel. So कैसे call करेंगे? Go to file, go to open, go to data, go to file, go to open, go to data. Again, go to the path where you can save your data. Now my data is saved on desktop, click on it. Now my data is in the form of this folder, just click on it. And my data is file is in the form of Excel, click on it. This one is my file, open and continue. So this one is my data set: person, gender, religion, age, सी मंथली इनकम विदाउट स्पेसिंग, हेल्थ स्कोर विदाउट स्पेसिंग. तो जो भी आप डेटा अपना फ्रेम करेंगे, जो भी डेटा आप राइट कर रहे हैं एक्सेल में, उसको एसपीएसएस के अकॉर्डिंग आप सेट करेंगे, उसको एसपीएसएस के अकॉर्डिंग आप मेंटेन करेंगे. नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट इज, आफ्टर कॉलिंग द डेटा यू शुड हैव टू कोड इट हेयर. नाउ कम टू द वेरिएबल व्यू. जब आपने कॉल कर लिया, डेटा को आपने कॉल किया, और डेटा कॉल करने के बाद जब आप देखेंगे, वेरिएबल व्यू जरूर आइएगा वेरिएबल व्यू में. क्यों? बिकॉज वेरिएबल व्यू में आपको लेबलिंग का, यहां पर आपको डायरेक्ट, यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सटेंडेड फॉर्म लिखना पड़ेगा. यू हैव टू राइट द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ योर क्वेश्चन. पर्सन देयर इज नो नीड ऑफ राइट राइट पर्सन. Gender of the respondent, religion of the respondent, write it extended form. And the next important and most important part is gender coding. जब आप कॉल करते हैं तो कोडिंग उसमें मेंशन नहीं होती है, वो आपको 1 2 3 के अकॉर्डिंग दे देता है. लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको यहां पर कोडिंग करनी पड़ेगी. हमने क्या कहा था क्वेश्चन में कि 1 फॉर मेल 2 फॉर फीमेल. तो 1 फॉर मेल, एडिट हेयर, 2 फॉर फीमेल, 2 फॉर फीमेल. आपने क्या किया? कोड कर दिया, ओके किया. अब जो आपका डेटा व्यू में डेटा आ रहा है, देखिए मेल फीमेल, और वैल्यू लेवल में सिर्फ इसी को आपने चेंज किया है अभी, इसलिए ये मेल फीमेल शो हो रहा है. बाकी रिलीजन को भी 1 2 3 में, इसको भी अगर आप 1 2 3 4 कर देंगे तो डेटा आपको उसी के अकॉर्डिंग कोड करेगा. तो ये इंपॉर्टेंट है कि वंस यू कॉल योर डेटा फ्रॉम एक्सेल शीट, आफ्टर कॉलिंग दैट डेटा, two things you should have to be filled. That one is label, write the extended form of your question, and values means coding form, what you have coded in Excel sheet, राइट इन द एसपीएसएस. तभी उसी के बेसिस पर वो बाइफर्केट कर पाएगा. क्योंकि सपोज यू आर इंटरेस्टेड इन व्हाट इज द education of a particular religious, according to the religion, then that way your data is important, play a vital role. Coding is play a vital role in that such type of question. So इस तरह से coding जो है वो आपको बाद में पुट करनी पड़ेगी. Now next thing is, come to the PPT and want to show the PPT. Next important thing is now after calling the data,
So this is the command of calling the import the file, go to open, go to data, click on the path where you can save your data and click on it. The next important part is data screening. Why it is important? Data screening is important because here you can easily check that data entered properly or not. Second important thing is check for missing values, deciding how to deal with the missing values, check for outliers, check for normality. So important thing is data screening is important because once you enter data properly, it is reflect on your answers. Check the missing values. Is there any missing values are there? Outliers is important because it play a vital role in your summary, in your analysis, because outliers gives you an idea about means what is outlier, the point which is away from the bulk of the data. It play a vital role in your test because uh, it also create a problem in the form in normality, because normality is the important part of your analysis. In any type, first you have to check the normality of your data set, then after that you can decide we can use the parametric test or non-parametric test. So in that cases data screening is very important. So how to check your data, how to screen your data? Now come to the data file, go to analyze, go to descriptive statistics, and go to frequencies, and then you get the particular screening of the data set. Go to analyze, command is go to analyze, descriptive, then frequency. Now come to the data set which I have already made. This is the data set which I has already put it here. This is the personality, gender, religion, age, monthly score, monthly income, health score, personality score, activity score, average score, and data view. This is the data set according to the coding. Now I want to know the, is there any values is missing, what is the outlier, what is the summary of the data set. Just go to analyze, go to descriptive, go to frequency. As per the coding, go to analyze, go to descriptive, go to frequency. Now you are interested in, is there any values missing in the variable? How can we know that values are missing or not? All are the variables are there. Click on the variables, or now come in the variable section, click on it. Now put it this one by using the arrow. कैसे करेंगे? आपने क्या किया? First you select all the variables in which you are interested, click it here. Now click it here. Now all the variables come in this variable window. Now you are click on statistics. You are interested in any mean, median, mode, click on it. You are interested in standard deviation of a particular variable, click on it. If you are not interested, continue. You are interested in any chart of it, click on it, continue. And okay, now go to window, then here click on window. Now click on output, click on it. Now you get the output of your data set. See it here. Total values are 25, 25 जेंडर ऑफ अ पर्सन, यानी 25 सैंपल्स हमने कलेक्ट किए थे, और सभी की जितने भी वेरिएबल्स हैं, ऑल वेरिएबल्स हैव 25 वैल्यूज. Any value is missing? No. 0 0 0 0 0 means no values are missing. अगर कोई वैल्यूज मिसिंग है तो उसके लिए अलग है कि आर्बिट्रेरी इंपुटेशन मेथड से, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे. वी कैन कंसीडर इन आर्बिट्रेरी इंपुटेशन मेथड एंड पुट इट here. तो in this questionnaire no values are missing. तो 0 0 0 सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है, कोई वैल्यूज हमारे पास मिसिंग नहीं है. जेंडर ऑफ अ पर्सन, मेल हमारे पास 14 है, फीमेल 11. टोटल 14 मेल्स हैं, फीमेल 11 है. परसेंटेज 56, 44% है. Religion of a person, here we get the frequency of all the variables, how many variables, what is the monthly income. So here we can easily know the data screening of all the
वेरिएबल्स। तो डेटा स्क्रीनिंग हम यहां से पता कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, missing value. Next and important part is missing value. Why missing value is important? Because every time when you send your questionnaire, either you have face to face deal or sometimes face to face, sometime internet क्वेश्चन, तो जैसे भी आप क्वेश्चन आयर सेंड करते हैं तो रिस्पोंडेंट हमें रिस्पॉन्स नहीं करता है। तो जब रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो आप उसको क्या करते हैं, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, या कभी कदार होता है कि बहुत लोग उसको फिल कर देते हैं। तो उसको मिसिंग वैल्यूज को हमें क्या करना चाहिए, मिसिंग वैल्यूज जब हमारे पास एक्सेल शीट जनरेट होकर के आती है थ्रू गूगल शीट, तो हम क्या करेंगे उसे कि उसको मिसिंग वैल्यू को दे वी हैव टू डिफरेंट ऑप्शंस व्हाट वी डू। Why missing values create problem? Study may be complex. Subject purposefully did not answer. Questions may be confusing. Miss the questions. Questions may not provide appropriate choice due to data entry mistake. Yani these are the issues for the why these are the issues इन फॉर मिसिंग वैल्यूज। मींस अगर मिसिंग वैल्यूज की क्यों क्रिएट होती है, ये सारे इश्यूज रीजंस हैं जिनकी वजह से मिसिंग वैल्यूज क्रिएट होती हैं। क्योंकि आप कभी कदार क्वेश्चंस आप ऐसे पुट कर लेते हैं जिसका उसका जवाब नहीं होता, मींस क्वेश्चंस में क्लियरिटी नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है कि जब आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, वंस योर ऑब्जेक्टिव इज क्लियर, योर क्वेश्चन आयर योर नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी लेस। यानी आपके जब ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तो क्वेश्चंस आपके कम होंगे और ज्यादा क्लियरिटी होगी। तो क्वेश्चंस ऐसे रखना चाहिए कि वन टाइम में क्लियर हो जाए, जिसका कि रिस्पॉन्स इजिली दे पाए। कभी कदार होता है कि फेस टू फेस में वो क्वेश्चन आयर का जो क्वेश्चन होता है उसका हम रिस्पॉन्स नहीं दे पाते, कुछ ऐसी चीज होती है जो हेजिटेट करता है जवाब देने में। तो क्वेश्चंस ऐसे रखना चाहिए जिसका ये एक अलग इशू है कि फेस टू फेस इंटरव्यू और टेलीफोनिक अलग अलग चैलेंजेस हैं जिसको हम डील करते हैं, लेकिन मिसिंग वैल्यूज हर एक में अराइज हो सकती है, उनके ये सारे रीजंस हैं। तो इनको कैसे डील करना है मिसिंग वैल्यूज को? देयर आर कंप्लीट केस एनालिसिस, देयर आर two types of methods to deal with missing problems. One is complete case analysis, the second one is the arbitrary imputation method. तो complete case analysis का क्या मतलब है? Complete case analysis means delete the row or column where the data is missing, यानी आप उस रो को डिलीट कर दीजिए जहां पर डेटा मिस हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, समटाइम्स इट कंटेन्स वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन, और क्या होगा जब आप डिलीट कर देते हैं तो देयर इज अ लॉस ऑफ सम इंफॉर्मेशन। तो इट इज नॉट अ गुड मेथड टू डिलीट that row or column once your data is missing. तो delete करना is not a better option, right option. So what we do, we use the arbitrary imputation method, means we replace that value with the arbitrary value, and arbitrary value is nothing but mean, median and mode. मीन मीडियन मोड जैसे आपको जरूरत हो, मीडियन है डेटा आपका कैसा है उसी के अकॉर्डिंग आप उसको नियर बाई वैल्यू से मीन मीडियन आर्बिट्रेरी इंप्यूटेशन मेथड थ्रू मीन वैल्यू और आर्बिट्रेरी वैल्यू मीडियन और मोड, उसके अकॉर्डिंग आप उस वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो मिस नहीं होगी और आप ज्यादा बेटर रिजल्ट की तरफ मूव कर पाएंगे। सो हाउ कैन बी डील विद मिसिंग वैल्यूज? गो टू एनालाइज, गो टू डिस्क्रिप्टिव एंड गो टू फ्रीक्वेंसी। और ये ऑलरेडी मैं शो कर चुका हूं आपको कि मिसिंग वैल्यू हम सिमिलरली जब हम एनालाइज करेंगे डिस्क्रिप्टिव और फ्रीक्वेंसी में, अभी हमने देखा हमारी कोई वैल्यूज मिसिंग नहीं थी, वहां पर मिसिंग वैल्यू में हमारा कोई भी नहीं आया था। अगर कोई वैल्यू मिसिंग होती देन वी यूज द आर्बिट्रेरी इंप्यूटेशन मेथड। The next part is outlier. What is outlier? The point which is away from the bulk of the data. Why it is important? Because it play a vital role in the normality of our data set, because normality decide that we use parametric test or non-parametric test. So in this case, if your outlier play a vital role, we said that how can we check the outliers
of our data set, we make the box plot of the data set. Box plot क्या होता है? Box plot gives you an idea about the 5-point summary. 5-point summary means box plot 5-point summary कहलाता है, क्योंकि box plot is first value is given, minimum value of the data set, maximum value of the data set, first quartile, second quartile and third quartile. These 5 values given by the box plot. कैसे हम बताएंगे किसी भी डेटा सेट का बॉक्स प्लॉट कैसे बनाएंगे? गो टू एनालाइज, गो टू डिस्क्रिप्टिव एंड गो टू एक्सप्लोर. नाउ कम टू द डेटा शीट. Now come to the data sheet, and here see how to calculate the box plot, how to make the box plot. Go to analyze, go to descriptive, go to analyze, go to descriptive, go to explore. You are interested in making the box plot of health score. Click on it, and you are interested in plots. Click, unclick the stem leaf, it considered by default. Continue. And you are, suppose you are also interested in activity score. Click on it. Okay. See health and activity score box plot आपको यहां पर शो हो रहा है. देखिए health of the data, health score, this is the box plot. Sir, screen is not showing the box. Yeah, box plot is showing you or not? Not showing, sir. Not showing, sir. Okay, wait, sorry. Just 2 minutes. Now it is clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, this one is the box plot of health score. I'm interested in health and activity score. This one is the box plot. See, this one is the box plot. Box plot, this is the value. This one is the box plot. This one is the minimum value. This one is the first quartile. This one is the second quartile, which is second quartile is also known as median. This one is the third quartile. This one is the, this value is the maximum observation. So this gives you an idea about the 5-point summary. And activity score, just like activity score also gives you an idea about the box plot. Here for activity score is also here. So क्या करते हैं हम जनरली कहते हैं डिलीट कर दिया जाए, बट इंस्टेड ऑफ डिलीशन यू इसमें कैन मेंशन कर सकते हैं सर इसमें कि ये हाईएस्ट वैल्यू है, ये मेंशन कर सकते हैं. हाँ मेंशन कर सकते हैं सर. राइट क्लिक करके आप मेंशन कर सकते हैं. यहाँ पे कुछ एडिट करना चाहें तो आप इजिली उस पर राइट क्लिक करके आपको इस तरह से मेंशन हो जाएगा. यहाँ पे क्लिक करना चाहेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम क्लिक कर सकते हैं, मेंशन हो जाएगा वो वहां पे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज, इजिली आप मेंशन कर सकते हैं वहां पे. राइट क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, देन इट विल गिव यू द file, another file where you can write it easily there. Now the next point is normality. The next important part is normality of our data. How to check the normality of the data set. Why it is important? Because first you have to check the, before apply any parametric or non-parametric test, you should check the normality of your data set. Sometimes they apply t test before checking that data is normal or not. ANOVA apply कर देते हैं, t apply कर देते हैं कि हमारा डेटा नॉर्मल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है बगैर इसको चेक किए हुए. तो t, ANOVA, ये सारे टेस्ट तभी अप्लाई कर सकते हैं once your data is normal. So what is normality? A normal distribution, a symmetric bell-shaped curve defined by two things, mean and variance. Why normality is important? Because
your statistical test based on the assumptions of normality. अगर आपका डेटा नॉर्मल है, then you can apply parametric test. If your data is non-normal, then after that you can use non-parametric test. So what are the parametric test? Parametric test क्या है? T independent two sample T test use कर सकते हैं, T test for single mean use कर सकते हैं, pair T test use कर सकते हैं. ANOVA है आपका, one way ANOVA, two way ANOVA, all are the parametric test. और you must follow the assumption that your data must be normal. डेटा आपका नॉर्मल होना चाहिए, अदरवाइज आप इसको नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज नहीं कर पाएंगे. अगर डेटा फॉलो नहीं करता है नॉर्मेलिटी, देन आप क्या करेंगे? आपको कोई जरूरत नहीं है नॉर्मेलिटी चेक करने की, अगर मतलब प्रॉब्लम परेशान होने की. नो नीड टू वरी अबाउट दिस, दैट इफ योर डेटा इज नॉन नॉर्मल, देन नो नीड टू वरी अबाउट इट. यूज द अल्टरनेटिव टेस्ट. टी टेस्ट का अल्टरनेटिव इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है दो ग्रुप्स के बीच में, तो आप वन विटनी यू टेस्ट यूज कर लीजिए नॉन पैरामेट्रिक में. अगर एनोवा लगाना है तो क्रुस्कर वॉलिस टेस्ट यूज कर लीजिए, फ्रीडमैन यूज कर लीजिए. अगर आपको पेयर टी टेस्ट लगाना है, विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट यूज कर लीजिए. ऑल अल्टरनेटिव टेस्ट आर हियर, सो नो नीड टू वरी अबाउट नो हमको एनोवा ही लगाना है विदाउट द फॉलोइंग अजम्पशंस. क्योंकि जब हर एक चीज के लिए अलग अलग ड्रग्स मेडिसिन अवेलेबल है, देन नो नीड टू वरी अबाउट इट. सो अगर हमारे पास डेटा नॉर्मल फॉलो कर रहा है, देन वी शुड अप्लाई द पैरामेट्रिक टेस्ट, अदरवाइज वी शुड इजीली मूव टुवर्ड द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नो नीड टू वरी अबाउट द पैरामेट्रिक, नो नीड टू वरी अबाउट द assumption. कैसे चेक करेंगे कि डेटा हमारा नॉर्मल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है? देयर आर three different methods to check the normality of our data set. The one is click on histogram with normal curve. How to check the normality with histogram with normal curve? Just go to data, analyze, go to descriptive, go to frequencies and histogram with normal curve. Now come to the main important part, main file. See, go to analyze, go to descriptive, go to frequency, reset it. I am interested in know the health score follow the normality or not, because I am interested in हेल्थ स्कोर. हेल्थ स्कोर पे हमें टेस्ट करना है और हमें ये देखना है कि हेल्थ स्कोर हमारा नॉर्मल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है. सो व्हाट वी डू, गो टू चार्ट and go to click on histogram with normal curve. Go to click on it histogram with normal curve, click on continue and click on OK. Now come to the main file and I want to show the output of the data set. That is, output will be, see, output is here. See the output, histogram with normal curve. हेल्थ स्कोर का हमने देखा. अब देखिए ये बेल शेप्ड कर्व बन रहा है, बेल शेप्ड कर्व बन रहा है, हिस्टोग्राम विथ नॉर्मल कर्व. सो now in this case, as per the histogram with normal curve, we can say that our data is normal. But reviewers sometimes said that no, it seems that little bit skewed. I am not interested in your histogram or histogram with normal curve. I am not satisfied with this curve. You can show with the p value. क्या होता है कि जनरली कहते हैं नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, आप पी वैल्यू से इसे शो कीजिए, लिटिल बिट स्क्यूड है, थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लग रहा है, अलग दिख रहा है. तो भाई रिव्यूअर्स को हमें ध्यान में रखना है. तो यू कैन गो, दे सेड दैट, रिव्यूअर सेड दैट प्लीज शो इट विद द पी वैल्यू. तो आप क्या करेंगे, इट इज बेटर टू मूव टुवर्ड द हिस्टोग्राम विद नॉर्मल कर्व, यूज द p value. Through p value you can justify it with the p value. So we have another option to justify that our data is normal or not. So this is the one way to check the histogram with normal curve. You can use it, but sometimes they are not satisfied. So that's why we use another option, that is through p value. सर हम p वैल्यू से कैसे दिखाएंगे, थोड़ा बताएंगे? हाँ, just I want to show it. Just wait. ओके थैंक यू.
See, the next another method is check the skewness and kurtosis. There is no thumb rule. If your values lie between -2 to +2, -3 somewhere right, -3 to +3, अगर skewness और kurtosis -3 से +3 के बीच में lie कर रही है, then we say that skewness your data is normal. But important part is check the normality plot with test. Your data, check the assumption of the normality with test through any testing. So it's better to use the Kolmogorov KS test and Shapiro-Wilks test. KS test, Kolmogorov Smirnov test, KS test, and Shapiro-Wilks test, SW test. So in this case, how can we calculate through p-value? Analyze, descriptive, and explore. Go to analyze, go to descriptive, and go to explore. Now come to the data file. Sorry. Go to the data file and go to window. See, go to analyze, go to descriptive, go to explore. Go to analyze, descriptive, and explore. Click on it. So as we say that I am interested in health score, click on dependent list. Rest is fine, no need to check it. Go to plot, and here you get unclick the stem and leaf plot. Stem and leaf plot होता है आपका कि if you are two values, one value is stem, second is leaf. So no need to by default it consider click it here, but no need to unclick it here. Go to normality plot with test. In plots, go to normality plot with test. Continue, and now this one, go to window, go to output. Output show हो रहा है सबको, everyone? Normality plot with test. नहीं सर अभी नहीं हुआ शो. अभी शो नहीं हुआ, just wait 2 minutes. See, now it's fine. Normality. Yes, Test sir, for yes, sir. normality. Okay. See, health score, KS test, Kolmogorov and Shapiro-Wilks test. Both values are given. You can consider anyone. KS test, here what is the value of sig value is the p value. तो याद रखिएगा sig value जो आपकी value है, that is your p value. If p value is greater than 0.05, then your data is normal. अगर p value 0.05 से ज्यादा है तब आप कहेंगे डेटा नॉर्मल है. देखिए दोनों केसेस में हमारी p value कितनी आ रही है. In Kolmogorov Smirnov your p value is 0.200. इस केस में हमारी p वैल्यू क्या है, 0.05 से ज्यादा या कम है, बोथ केसेस में. Says KS value and SW value, p value is greater than 0.05, then we can easily set that p value is p value follow the our health score follow the normality assumptions. हमारा डेटा हेल्थ स्कोर का नॉर्मेलिटी फॉलो कर रहा है, हेल्थ डेटा नॉर्मल है, नॉर्मल एजम्पशन को फॉलो कर रहा है. अगर पी वैल्यू ज्यादा आ रही है तब हम कह सकते हैं कि डेटा हमारा नॉर्मल फॉलो कर रहा है हेल्थ स्कोर का. अगर नहीं आती देन वी कैन यूज द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. अगर ये फॉलो कर रहा है हेल्थ स्कोर को हम एनी पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं. अगर ये नहीं करता, लेस देन 0.05 होता, तब हम इसे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए यूज कर पाते. तो दिस टेस्ट केस test and Shapiro-Wilks test is used for the normality assumption. सर रिपीट So, करेंगे स्टे हुआ सर मैं थोड़ा yes, please. Yes, any query? सर रिपीट करेंगे, स्टेप में थोड़ा मिस हो गया था मेरा. Okay, no issue. I want to repeat it. Just see, output is visible. यस सर. Okay. Can I repeat output or from the how to check the normal? Step. How Steps. to check? Go to analyze. Okay. Yes, sir. Go to analyze. Go to descriptive. Go to explore. Okay.
go to analyze, go to descriptive and go to explore. Click on it. सर लास्ट टाइम You are फ्रीक्वेंसी में गए थे, लास्ट वाला टेस्ट फ्रीक्वेंसी में गए थे, इसमें एक्सप्लोर में जाएंगे। हाँ एक्सप्लोर में जाएंगे, उसमें फ्रीक्वेंसी में गए थे। एज पर द नीड वी कैन यूज डिफरेंट ऑप्शंस। ओके ओके ओके, go to analyze, go to descriptive, go to explore, click on it. Now I am interested in health score. हमें चेक करना है कि हेल्थ स्कोर हमारा नॉर्मल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो फर्स्ट वी रीसेट इट, हेल्थ स्कोर, आई एम इंटरेस्टेड इन हेल्थ स्कोर, क्लिक ऑन डिपेंडेंट लिस्ट, क्लिक कर लिया हमने। नाउ कम टू द प्लॉट्स, आई एम इंटरेस्टेड इन नॉर्मेलिटी प्लॉट विद टेस्ट, नॉर्मेलिटी प्लॉट विद टेस्ट एंड अनक्लिक द स्टेम एंड लीफ, क्योंकि ये स्टेम एंड लीफ आएगा आप कंफ्यूज होंगे, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है। आई एम इंटरेस्टेड इन नॉर्मेलिटी प्लॉट विद टेस्ट, क्लिक ऑन इट, क्लिक ऑन कंटिन्यू, क्लिक ऑन ओके। Now see the output here, normality test for the normality. See output show हो रहा है आपको? यस सर। See here all the Kolmogorov, Smirnov and Shapiro-Wilk test, both values sig value. Sig value is nothing but p value. Okay, sig value is nothing but p value. Both values are greater than 0.05. If this p value is greater than 0.05, 0.05 means alpha, level of significance, which you already fix, जो आप पहले बताते हैं, फिक्स कर लेते हैं। 5% जनरली बाय डिफॉल्ट हम कंसीडर करते हैं, तो 5% से अगर ग्रेटर आ रही है, 0.05 से ग्रेटर है अगर p value, then we can say that our data follow the normality assumption, our data follow the normal हमारा डेटा है। अगर नहीं फॉलो कर रहा है, p value is less than 0.05, then we can say that our we move towards the non parametric test। अगर p value greater है 0.05 से, देखिए यहाँ पे कितनी आ रही है, 0.200, 0.139, both p values are greater than 0.05, so we can use it data पैरामीट्रिक टेस्ट, follow the जी यस पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करेंगे इसकी। पैरामेट्रिक टेस्ट, जैसे टी हो गया, पेयर टी टेस्ट यूज करते हैं, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूज करते हैं, एनोवा यूज करते हैं 1 वे 2 वे। अगर नॉर्मल फॉलो करेगा तभी आप यूज कर पाएंगे, अदरवाइज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करेंगे। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, आई थिंक वी शुड complete this session and we start from the tomorrow from So any assignment for Okay. tomorrow sir? हाँ हाँ सेम टाइम रहेगा 5 बजे से Okay. 5 p.m. We start from the 5 p.m. and we start with some techniques like T, correlation, regression, one-way ANOVA. All I try to complete, but because it is difficult to complete the statistical analysis within 2 hours, so I will try my best to give you some brief idea about the SPSS, so you can easily deal with issues which you face. Okay. Yes, sir. Thank you so much, sir. It was quite beneficial. Thank you so much. थैंक यू सर। Thank you. ओके, देयर इज एनी क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, और अदरवाइज हाँ, any query, if you have any query, any type of questions you have. I have or I have posted a link. You can give your review regarding this workshop. Okay, how was the workshop? ठीक है ना? तो you can leave your comments here. If you have any query, कोई भी query हो इससे related या आपकी research जो आप कर रहे हैं उससे related हो, आप पूछ सकते हैं। सर मुझे Hello, पूछना sir. Hello, sir. एक जस्ट मिनट प्लीज। था, जो लिंकेज एक लाइकेज क्वेश्चन होते हैं सर। एक मिनट नंद साहब, एक मिनट। जस्ट स्पीक योर नेम एंड योर ऑर्गेनाइजेशन नेम, आफ्टर दैट यू कैन आस्क द I'm क्वेश्चन। Nandkishore. I am from Arun Jaitley National Financial Management, and I am research scholar from Bharat Vidyapit. Okay. सर पूछना था कि सर जो लाइकेज जो क्वेश्चन होते हैं, एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, इस क्वेश्चन के लिए सर कौन से टेस्ट यूज करते हैं हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए? एक्चुअली एक चीज़ ध्यान में रखना होगा आपको कि जनरली ये नॉन पैरामेट्रिक की तरफ मिलते हैं, और जब आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, मैं बता रहा हूँ टेस्टिंग जस्ट लाइक अ मेडिसिन, तो जब आपका ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, सपोज आपके बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, मैनेजमेंट में जनरली पीसीए यूज करते हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, सो मेनी ओपिनियंस आर देयर, है ना,
बहुत सारे ओपिनियन होते हैं लिकर्ट स्केल में। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इस पे डिपेंड है। तो पीसीए बहुत जगह यूज करते हैं, ज्यादातर आप लोग कंफर्मेटरी फैक्टर सीएफए यूज करते हैं, स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग यूज करते हैं। तो जैसी नीड है, आपका ऑब्जेक्टिव है, उसी के बेसिस पर आप एनालिसिस कर पाएंगे। तो जैसे ऑब्जेक्टिव होगा उसी के अकॉर्डिंग आप मेडिसिन देंगे, एनालिसिस स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगेंगे। अगर तो आपको सर दो ग्रुप के बीच में कंपैरिजन करना है तो आप सिंपली जो है उसके थ्रू हो सकता है आपका विल्कॉक्सन साइन रैंक के सॉरी मान बिटनी यू टेस्ट के। तो जनरली नॉन पैरामेट्रिक होता है, अगर डेटा नॉर्मल आ रहा है तब आप पैरामेट्रिक टेस्ट यूज कीजिए। लेकिन क्या टेस्ट यूज होगा ये डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। So I request the all participants kindly open your camera for a And I want screenshot. to add one more thing that if you have any query regarding any type of research, then I can, after this session or after the workshop, I can give you a response. तो आपको जो है मैं रिस्पॉन्स कर सकता हूँ। अगर आपकी क्वेरी कुछ है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन। Okay, okay. I request the all participants kindly open your camera for a screenshot. And if there is a कोई पूछ रहा था any questions of सर, आपकी क्लास में ली काफी काफी यूजफुल, आपकी दो तीन क्लास ले चुका हूँ मैं सर आपकी। अच्छा, अ, थैंक यू। तो काफी यूजफुल क्लासेस आपकी सर। Thank you, थैंक यू। thank you. Please open your camera for a screenshot. Someone asked, I think the iPhone is not showing the name. I think that you asked there will be video recording or not. तो इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है। आपको लास्ट डे हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे। एनी डोंट क्वेश्चन? वरी, डोंट वरी। Hello, sir. यस यस प्लीज। Yes, sir. It's me, Said Dighed from Kashmir University. ओके। Sir, I posted a question in the chat box. Okay, the first replicate 2 out of So, 20 insects died. okay, I request the all participants kindly open your camera, please. Just a second. कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोगों ने नहीं किया है। सर तब तक आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो आई रिक्वेस्ट द ऑल पार्टिसिपेंट, किरण, हसीना, एच के, सैयद दिग्गज, शमा, साहिल, कनीज, हुसैन रब, अंतरा। आई थिंक देर इज ए You can consider this as a missing value. Yes, खोलिए sir. अपना कैमरा, कैमरा खोलिए प्लीज। If any patient or any insect died, okay, Yes, because sir. it your data, so you can consider it as a missing value and use the arbitrary imputation method. Missing Okay. value. Yes, sir. Which technique you have used here? Sir, कौन I सी have to technique? use ANOVA. ANOVA. So that's why I am saying ANOVA. This is the concept of missing value. You know the concept of missing value in ANOVA? No, sir. It is a concept of missing value. You can consider it as a missing value when you entered your data in SPSS. आप इसको मिसिंग वैल्यू में कंसीडर करिए। और इसको जब मिसिंग, भाई कोई चीज 20 में से आपकी मिसिंग है 2-3, तो क्या करेंगे आप? उसको रिप्लेस कर दीजिए आर्बिट्रेरी इम्पुटेशन मेथड No, से। sir. No, sir. It is not like that. Sir, ओके it is I am checking the efficacy of the plant extracts on the mortality of the insects. ओके For this, I have taken different concentrations of each extracts. And for each concentration, I have taken 4 replicates. And my ओके sample size is, sir, 80 here. ओके Sir, now like if it is like that, now out of 80, if 10 insects die in the interval of the 24 hours, ओके। how my query is that how to enter such kind of data in the in SPSS. अच्छा, तो ये आपके पास कितने ग्रुप्स हैं इसमें? R1, Sir, R2, R3, first sir, you have four, put the four, four replicate. replicas. Yes, Four sir, for replicates each. are there. Okay, okay. Yes, sir. Just I want to just click on variable data entry view. Okay, data variable view. Just go to variable view. Yes, sir. First, just go to variable view and click. Just write the replicate as a variable. Right, sir. Okay, Right, and sir. there are four replications are there. Okay, Yes, yes, sir. so first code one as a R1, Okay, sir. two as a R2, three and four, just like okay. Okay, sir. And the second variable is values of the replicate. Right, sir. Okay, and Yes, put sir. it all the values just like the R1 R2, how just like your values are given.
Sir, how many dependent variables I have to create in this variable view? No, dependent and independent variable generally decided by you because you are Yes, a sir. Yes, researcher. sir. Right, sir. That's why. Okay. Yes, sir. आप ऐसा करिएगा, आप मुझसे नंबर मेल पे मुझसे बात कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा, क्योंकि उसमें और भी इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी, तभी मैं बता पाऊंगा प्रॉपर ओके सर, इंफॉर्मेशन। सर मैंने आपको मेल भी किया है अभी। अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगा उसको। ठीक है, ओके मैं सर, थैंक उसके यू। बाद में थैंक बताता यू हूँ। सर। थैंक यू सो मच। एनी क्वेरी, एनीवन? एनीवन? एनी क्वेरी? I think we should leave. थैंक यू सर, थैंक यू सर। Thank you so much. If you have any query, if you all have any query, you can easily Sir, contact me. can you tell me about the tomorrow? What should we do so we can we will try about SPSS. Generally, we deal with So that we the. can have a hand-on experience. Actually, the problem is online session is the hand-on sessions. Generally, we face on the online session, but I try my best to give you some brief idea about SPSS. So, generally, tomorrow we consider the first we repeat with the normality and t test for single mean, t-test for pair t-test, independent sample t-test, correlation, regression, ANOVA. There are so many techniques for tomorrow, but it is difficult to complete within 1 hour. So I try my Yes. best. Some important techniques are left, but I try my best to complete within 1 hour. So it is a challenging task for me, but I will try सर my कुछ best. कुछ डाटा है हमारे पास, तो उसको टेस्टिंग करना थोड़ा बताइए, मतलब प्रैक्टिकल बताइए। कुछ डाटा है मेरे पास, जी तो उस पर आप बताइए कि ये टेस्ट सही लग रहा है नहीं लग रहा है, क्या टेस्ट लगाना चाहिए। हाँ, तो आप मुझे बताइएगा कब। अभी तो जैसे मतलब ये कैसे, मैं कोई चीज़ है क्या कर रहे हैं आप रिसर्च में, उसके बेसिस पर आप बताएंगे तो मैं बता सकता हूँ, फिर मैं हेल्प कर अच्छा सकता हूँ। अच्छा। ठीक है, तो आप ठीक मुझसे है। कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा। मेरी ईमेल आईडी मैं शो कर देता हूँ, लिख देता हूँ। यस सर। कांटेक्ट नंबर भी है, मैं शो कर देता हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है। ठीक है। मैंने चैट बॉक्स में मेल आईडी और दोनों चीज़ें शेयर कर दी हैं। मेल आईडी और कांटेक्ट नंबर आप नोट कर लीजिए, और किसी को कोई भी इशू हो तो पूछ सकता है। Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। Thank you so much, sir. थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू। Thank you, sir.